क्वेश्चन नंबर 9. यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स. देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट. दैट मीन्स यू कांट यूज एग्जाम्पल टू प्रूव द गिवन equation. So by using property of the sets, you have to prove that two results. First one, which is A union A intersection B equal to A, and second one, which is A intersection A union B equal to A. You have to prove these two results. जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव किया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो कल किसी ने ट्राई किया है उनको पता होगा कि ये इक्वेशन कल क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डायरेक्ट लिखा था, है ना, वेन डायग्राम का यूज करके हमने वेरीफाई कर लिया था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो ये इक्वेशन हमने यूज किया था क्वेश्चन नंबर 3 में. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू प्रूव दिस सेम रिजल्ट्स. डन. Two results are there. So now let x belongs to. Suppose if you want to prove two sets are equal, what we are doing? We are proving that suppose if you want to prove A subset B, if you want to prove A is subset of B, if you want to prove two sets are equal, then what we are proving? We are proving that A is subset of B, and also we are proving B is subset of A. If you can prove these two results, so by using these two results we can say that these both given sets are equal sets. So here we have to prove these given two sets are equal. Done. So for that what we are proving? We are proving that A union A intersection B is subset of A. Similarly, A is the subset of A union A intersection B. Then we can say that these given two sets are equal. This one and this one. These two sets are equal. So now consider one element X which is belongs to A union A intersection B. We are starting from this one. We are considering one element X which belongs to set A union set of A intersection B. What it means? Our X belongs to union of these two sets, and therefore we can say that our X belongs to set A, or our X might be belong to A intersection B. X belongs to A union A intersection B. That means X belongs to A or X belongs to A intersection B. Now again here, if X belongs to A intersection B, which means that X belongs to A and X belongs to B. So here this condition says that X belongs to A and also X belongs to A and X belongs to B. So combining these both conditions, we can say that our X belongs to A. Done. So first case which says that X belongs to A union A intersection B, and this result says that X belongs to A. So again combining these both conditions, we can say that if X belongs to A, if all the elements X belongs to this set, and if all the elements X belongs to A, we can say that this one is subset of this set. Done. And therefore it implies that A union A intersection B is subset of A. Done. Or X belongs to this set as well as X belongs to this set. So all the elements of this set belongs to set A. Say result 1. Here we will prove A subset B. Now we will prove B subset A. Therefore we can write these two sets are equal. So here we will prove A union A intersection B subset of A. Now what you have to prove? We have to prove that A is subset of this set, है ना. इसका रिवर्स प्रूव करेंगे. So for that we will consider element Y. So now let one element Y which is belongs to set A के अंदर है. So if element Y belongs to set A, we can say that element Y also belongs to A union B.
अगर कोई एलिमेंट y सेट A में होगा तो वो एलिमेंट A यूनियन B में भी होगा। वाई? बिकॉज A यूनियन B में क्या होगा, A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट। A के सारे एलिमेंट मीन्स y भी आ गया, सो y बिलोंग्स टू A यूनियन B। डन। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू A, दोनों को कंबाइन किया, y बिलोंग्स टू A, y A में भी है और y A यूनियन B में भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे उसमें भी होगा। सो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B, है ना। दोनों कंडीशन को कंबाइन किया, देखो y A में भी है और y A यूनियन B में भी है, तो y बिलोंग्स टू दिस सेट ऑल्सो एंड दिस सेट ऑल्सो। y बिलोंग्स टू बोथ दिस सेट्स, दोनों सेट में है तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे उसमें भी y होगा। सो y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन A यूनियन B। सो नाउ अगेन we can apply distributive law over here. So we can say that y belongs to A intersection A union A intersection B. Done. So what is A intersection A? So y belongs to A intersection A means A union A intersection B. So combining these both conditions, y belongs to A and y belongs to A union A intersection B. Therefore, what we can say, इसका converse, so A is subset of A union A intersection B. Done. Say result number 2. This is result number 2. Now from result 1 and result 2, A union A intersection B is subset of A and A is the subset of A union A intersection B. हो गया है, A is subset of B and B is subset of A. So conversely we can write A is equal to B. So from result 1 and result 2 we can say that A union A intersection B is equal to set A, that you have to prove. Clear students? Now similar result 2 is there. We have to prove A intersection A union B equal to A. So here what you have to prove? We are proving two results, है ना। First one is we are proving that A intersection A union B is subset of A. क्या प्रूव करना होगा? A intersection A union B is subset of A, और इसका रिवर्स क्या प्रूव करना होगा? A is subset of this one, A intersection A union B, है ना। ये दोनों प्रूव करेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that A intersection A union B is equal to 1. ये दोनों प्रूव करेंगे। डन। सो फर्स्ट कंसीडर फर्स्ट रिजल्ट, उसके लिए हम कंसीडर करेंगे सपोज x, इसके लिए y ले लें, और सपोज इसके लिए पहले ये प्रूव करें। सो लेट y बिलोंग्स टू, है ना, रिजल्ट 1 के लिए हम y लेते हैं। सो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B, है ना। हमने यहाँ से स्टार्ट किया। सो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B, इसका मतलब क्या हुआ? y A सेट A और A यूनियन B के इंटरसेक्शन में है, तो कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में कब होगा? जब वो एलिमेंट दोनों सेट में होगा, है ना। अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में है तभी जाके वो उसके इंटरसेक्शन में आएगा। सो हियर वी हैव कंसीडर दैट एलिमेंट y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B, और A यूनियन B इज वन सेट, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू सेट A and y belongs to A union B. Done. So अभी इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम? y belongs to set A and y belongs to
y belongs to A और y belongs to B, A यूनियन B में है, y belongs to A यूनियन B, तो A और B का जो यूनियन सेट है उसके अंदर y है, दैट मीन्स y A में होगा या फिर B में होगा। यहाँ पर तो क्या है, y belongs to A, तो कंफर्म हो गया कि y कहाँ पर है, y belongs to A, therefore y belongs to set A, y belongs to set A. So here y belongs to A intersection A union B and y belongs to A, तो y ये वाले सेट में भी है और y सेट A में भी है, तो क्या लिख सकते हैं हम, दिस सेट A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज सबसेट ऑफ सेट A। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1, डन। सिमिलरली वी कैन प्रूव रिजल्ट नंबर 2। So what is result number 2? For that we will consider one element x. So let x belongs to set A. Done. So we can say that if x belongs to set A, so x will also belongs to A union B. सेट A में होगा तो x A यूनियन B के सेट में भी होगा। So which implies we can also say that x will also belongs to A intersection A यूनियन B, है ना। सेट x हमारा A में भी है ना। देखो अच्छी तरह से देखो, ऑल एलिमेंट्स x आर इन द सेट A के अंदर भी है। अगर कोई एलिमेंट A के अंदर है तो वो एलिमेंट A यूनियन B के अंदर भी होगा। दैट मीन्स x सेट A में भी है और x A यूनियन B में भी है। और एलिमेंट x लाइज इन बोथ द सेट्स, तो अगर कोई एलिमेंट सेट A में भी है और वो एलिमेंट सेट A यूनियन B में भी है, तो सेट एलिमेंट दोनों सेट में है, दैट मीन्स वो दोनों की इंटरसेक्शन भी होगा। सो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। क्लियर? सो अगेन कंबाइन दिस बोथ कंडीशन, x हमारा A में भी है और x हमारा A इंटरसेक्शन A यूनियन B में भी है। All the elements lies in a A as well as all the elements lies in this intersection, lies in this set. So we can say that A is subset of A intersection A union B. Done. लास्ट वाला केस क्या हमने प्रूव किया था, ये प्रूव किया था A intersection A union B is subset of A. Here we have proved that A is the subset of A intersection A union B. So from these two conditions, what we can say, the given two sets are equal sets, and therefore we can say that A intersection A union B equal to A. This is your result number 2. This is again important sum, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार प्लेबैक करके देखना तो हो जाएगा। 10. Question number 9, we are given that by using the properties, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट यू टू प्रूव दैट इफ A intersection B is equal to A intersection C need not imply B equal to C। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरसेक्शन B इक्वल टू इंटरसेक्शन C है तो ये रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, ये रिजल्ट को ट्रू प्रूव करने के लिए B इक्वल टू C ये दोनों सेट का इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों सेट डिफरेंट हो गए तो भी ये इक्वेशन ट्रू होगा। डन। तो एग्जांपल से प्रूव करते हैं। सो लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, these are the elements of set A. Elements of set B are 2 3 4 5 6, and elements of set C are 2 3 4 9 and 10. Done. Now let's check A intersection B. What is our A intersection B? Our A intersection B will be common elements of A and B.
So they are 2, 3 and 4. It's a 2, 3 and 4. Now what is A intersection C? Common elements of set A and set C. Elements of A are 1, 2, 3, 4. C are 2, 3, 4. So intersection C is again 2, 3, 4. So here we can clearly see that A intersection B is equal to A intersection C. Done? हो गया proof? But whether it is B equal to C, elements of B and elements of C are equal? No, they are not equal. Elements of B are 2, 3, 4, 5, 6 and elements of C are 2, 3, 4, 9, 10. So set B and set C don't have the same elements. So two sets are not equal. For that, to prove this one needs not to be imply that these two given sets are equal. Clear? Now question number 11. In question number 11, we are given that let A and B be the two sets if A intersection X equal to B intersection X equal to 5. First we are given that A intersection X equal to B intersection X equal to 5. Say result 1. This is given, and also we are given A union X. A union X equal to B union X. These two sets are equal. Say result 2. For some set X, prove that. For some set X, you have to prove that set A equal to set B. ये आपको प्रूव करना है. Done. Also we are given hint. So let's start with the given hint. You have to use A equal to, है ना, hint भी दी है आपको. एग्जाम में आपको ये हिंट नहीं मिलेगी. क्या करना है ये सम के लिए? You have to prove A equal to A intersection A union X and set B equal to B intersection B union X. जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव किया और क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट ले लिया था वही. एंड ऑल्सो यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो अगेन यू टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, है ना. सो ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं. सो नाउ आई एम स्टार्ट विद द A intersection A union X. A intersection, this is given. So I am start with the right hand side of this equation. A intersection A union X. Now next step. We are given that A union X is equal to B union X from result 2. So first step I am using result 2. So that will be A intersection B union X. This is from result number 2. Done. Now next one, we have to use distributive property. So it will be A intersection B union A intersection X. So A intersection B union A intersection X. What we have used? Distributive property or distributive law. Done. Now next step, A intersection X. For this case, intersection X is given as 5. So A intersection B union A intersection X equal to 5. Reason, we use result number 1. Result number 1 in which we are given that A intersection X equal to 5. So put it 5. So A intersection B union 5. किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन, that will be set itself. So we are getting A intersection B. Done. So first we are getting A equal to A intersection B. Set A equal to A intersection B कब होगा? हमने ऐसा पढ़ा था एक क्वेश्चन में. If A is subset of B, है ना? If A is subset of B, so for that case A intersection B equal to A. So here A is equal to A intersection B.
So we can say that A is the subset of B. Clear? So say this one as a result 3. Done? We have to prove A equal to B, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि A equal to B प्रूव करना है तो क्या प्रूव करेंगे? A equal to B प्रूव करने के लिए पहले प्रूव करेंगे A सबसेट ऑफ B, उसके बाद प्रूव करेंगे B सबसेट ऑफ A. अगर दोनों रिजल्ट प्रूव कर दिया तो हम बोलेंगे A इज इक्वल टू B. तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया A इज सबसेट ऑफ B. क्लियर? Says this one as a result 3. Now next we'll start with the next result. So for next result we are given that A union X. What we are given? A union X equal to B union X. मैं इसको मैं साथ में रखता हूँ तो थोड़ा आपको आसानी रहेगी. कैसे रखे साथ में? एक मिनट, मैं इसको मैं साइड में रख देता हूँ. क्लियर? So now we are start with the this given result. A union X equal to B union X. This is our result 2. Now here next step, ये important step है, ये आपको याद रखना है. So here we can say that if A union X equal to B union X, we can say that B intersection with A union X will be same as B intersection B union X. If two sets are equal, then the intersection of that both equal set with some another set that will be also equal. Done? Venn diagram draw करके आप उसको verify कर लेना तो clear हो जाएगा. So now here B intersection B union X. Done? So what is B intersection B union X? B intersection B union X is given in our hand and that is equal to B. So next step is, और यहाँ पर भी हम है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं. So it's a B intersection A union B intersection X and that is equal to B. दो स्टेप्स साथ में किए. फर्स्ट वी अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड ऑल्सो वी यूज अवर हिंट नंबर 2, है ना. हिंट नंबर 2 यूज की हमने. B इंटरसेक्शन B यूनियन X, इसको हमने B बोल दिया और यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया. नाउ अगेन B इंटरसेक्शन X that is given in result which is equal to 5. Therefore B intersection A union this one is 5 equal to B. क्या यूज किया? रिजल्ट नंबर 1. Done? So union of any set with 5, there will be set itself. So it's a B intersection A equal to B. फिर से आ गया. If A equal to A intersection B, A is subset of B. If A intersection B equal to B, what we can say? We can say that B is subset of A. Say result number 4. So from result number 3 and result number 4, result 3 says that A is subset of B and result 4 says that B is subset of A, and therefore we can say that both are subset of each other, and that is only possible when A and B both are equal. Hence it's proved. Clear? So that is your question number 11. बहुत ही अच्छा समय, प्रैक्टिस करते रहना. Miscellaneous exercise, truly in the sense miscellaneous. 12 number. Now here find the sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty set. Non-empty set means empty नहीं है, null नहीं है. So here we are given that A intersection B is non-empty set, which is not 5. B intersection C is also non-empty set and A intersection C is also not empty set.
and prove that. What do you have to prove? A intersection B intersection C is 5. No, that is also given. You have to find the set A, B and C. Set A, set B and set C. Done. So let, again using by example, let set A equal to suppose 1 2, set B इक्वल टू ए और बी का इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन रखना है तो 2 को कॉमन रख दे, सो B इक्वल टू 2 3 एंड सेट C इक्वल टू सपोज इसको 2 4 कर दो और इसको कर दो 2 4, 1 2 1 4 कर दो, इसको 1 2 1 4, दिस वन इज 2 4, तो कंडीशन हो गई फुलफिल। कैसे? सपोज A intersection B, common elements are 1, so this is 1, so this is not null set. Second condition, B intersection C, इसमें common आ गया 4, this is again non-empty set. और third condition, A intersection C, A और C के बीच में common 2, which is again non-empty set. Done. But A B C intersection A intersection B intersection C is 5 हो रहा है, तीनों का कॉमन। A intersection B intersection C, तीनों के बीच में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है, so that is equal to 5. So our answer is A equal to 1 2, B equal to 1 4, C equal to 2 4. In your notebook you have to write some different sets, है ना? आपको खुद से तय करना है और कुछ सोचना है और आपको ऐसे आपको आंसर लिखना है। Done. So that is your question number 12. Question number 13. Problems related to practical examples. So in survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taken tea and 250 students taking coffee and 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. Find how many students taking neither tea nor coffee. So simple, कैसे करना है इसको देखो. So let we are considering set T. T is the set of students who likes tea. Set of students who like tea. And suppose set C is that, which is set of students who like coffee. आपको पूरा लिखना है. So number of elements in set T. How many students like tea? So we are given that 150 students in a group of 600 students. 150 students like tea. So number of elements in set T are 150. Similarly, number of students who like coffee. So number of elements in set C are 2 to 5. Done. And also we are given that each of the students also 100 were taking both tea and coffee. So tea भी उनको टी भी लाइक करते हैं और सी भी लाइक करते हैं, कॉफ़ी भी लाइक करते हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो वो सेट टी में भी आएंगे और सेट सी में भी आएंगे. दैट मीन्स दोनों इंटरसेक्शन में आएंगे. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, है ना, तो इंटरसेक्शन में आएंगे. सो दैट इज इक्वल टू 100. डन. और यहाँ पर हम फिर से अज्यूम करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ वो लाइक करते हैं, ठीक है, कॉफ़ी भी या टी भी. तो यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाइदर लाइक्स टेक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी. तो उसके लिए फाइंड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग आइदर टी और कॉफ़ी, है ना. यहाँ पर जो सेट होगा टी यूनियन सी, इसका मीनिंग क्या होगा? टी और कॉफ़ी. सो दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग आइदर टी और कॉफी, तो वो होगा टी यूनियन सी. यू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, तो वो बाद में कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास ए यूनियन बी वाला,
it's n of c plus n of t minus n of c intersection t. So n of c, number of students who like coffee, which is 225, like tea, which is 150, and both coffee and tea, which is 100. So number of students who like either tea or coffee is कितना हो गए 375 minus 100, so which is equal to 275. तो इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक आइदर टी और कॉफी, टी और कॉफी कुछ भी पसंद करते वो 275, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, नाइदर टी नॉर कॉफी। देखो इसको आपको फीलिंग करना है कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 600, है ना, उसमें से टी और कॉफी लेने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग आइदर टी और कॉफी, तो टी और कॉफी लेने वाले कितने हैं 275, है ना, दैट मीन्स 275 स्टूडेंट्स आइदर टी और कॉफी ले रहे हैं, और बाकी वाले क्या करें, कुछ भी नहीं ले रहे, नाइदर टेकिंग टी और कॉफी, so that is 600 minus 275, so that is your answer 325। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर ये जो सेट है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टी यूनियन सी हमारा क्या था, टी यूनियन सी इज टेकिंग आइदर टी और कॉफी, और बाकी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश से, तो ये वाला जो सेट है ना उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी और कॉफी ले रहे हैं और डैश, दैट मीन्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। तो सपोज आपको इसको फॉर्मूला में लिखना है, तो यहाँ पर आपको नोट डाउन करके लिखना पड़ेगा, कैसे होगा, सो टी यूनियन सी होल डैश इक्वल टू, इट्स यू माइनस टी यूनियन सी, डन। सो यू मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एन ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी और कॉफी, तो आपको मिलेगा देयरफॉर T union C whole dash equal to U minus T union C. So number of elements in T union C dash, which is equal to T dash intersection C dash, equal to n of U minus n of T union C. So n of U is 600 minus 275, and therefore your answer is 325. Number of students who takes neither tea nor coffee. Clear? So now next question is question number 14. Now, for question number 14, we are given that in a group of students, 100 students knows the Hindi. So let H be the set of students who knows the Hindi. Set of students who knows Hindi. Set of students students, 100 students know Hindi, 50 students know English. So number of students who knows Hindi are 100, and number of students who knows English are 50, and number of students who knows both Hindi and English. So for and we have to use intersection. So total 25 students are there who knows both Hindi and English, and each of the students knows either Hindi or English. So each student knows either Hindi or English. Then, so find how many students are there in a group. So question is how many students? How many students are in group? So
So important statement is given. Each of the students knows either Hindi or English. So meaning of the statement is total number of students who are present in a group knows either Hindi or English. That means the total number of students in a group are nothing but the n of H union T. That will give the number of students in a group. Clear? So now it's n of H union E. ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब स्टूडेंट आइदर हिंदी या फिर इंग्लिश बोल रहे हैं. सो इट्स n of H plus n of E minus n of H intersection E. n of H which is 100 plus n of E which is 50 minus intersection is 25. So our answer is 125. So number of students in a group are 125. Total 125 students are there who are present in a group. 15 number. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. So number of people H आपको डिफाइन करना है कि let H be a set of people who read newspaper H. So number of people who read the newspaper H is 25 people. So n of H is 25. Next statement, 25 people read newspaper H, 26 people read newspaper T. So let T be the set of people who read the newspaper T. So number of people who read the newspaper T, Times of India, suppose H Hindustan Times 26, and number of people who read the newspaper I, Indian Express. So n of I equal to 25. You have to define all three sets H, T and I. Done? Also we are given number of people who read newspaper H and I. H intersection I. H and I equal to 9. H and T 11. H and T both newspaper 11 people, and number of people who read both newspaper T and I is equal to 8. And 3 people read all 3 newspaper. H intersection T intersection I. So 3 people are there who read all these newspaper. So find the first question. That is the number of people who read at least one of the newspaper. At least one of the newspaper. So this type of questions can be solved easily by using Venn diagram. What do you use? Venn diagram. So before using Venn diagram, let's use our result 1. We have derived one formula, that is number of people who read at least one newspaper. That means either H or T or H or I. Done? So n of H union T union I. What is the meaning of this one? The people who read either H or T or I, at least one newspaper. So that is equal to n of H plus n of T plus n of I minus n of H intersection T minus n of T intersection I minus n of H intersection I plus n of H union T union I. Put the values. It's a 26 plus 25, 25 plus 26 plus 25 minus 9 minus 11 minus 8 plus 3. All this value. Simplification is, this one is 80 minus plus 380 minus this one is 28.
So 80 minus 28, which is equal to 52. So total 52 people are there who read either of the one newspaper, at least one of the newspaper. एक न्यूज़पेपर वो पढ़ रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें दिया है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, है ना. तो उसके लिए हमें वेन डायग्राम ही ड्रॉ करना पड़ेगा. तो देखते हैं कैसे करना है वेन डायग्राम से. फॉर एग्जाम्पल, total 3 sets are given. So this is our Venn diagram. Three newspapers are there. So these are the three newspapers. Hindi, 3 H, T and I. Now identify each area. So suppose this is area A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, this is G, and this one is H. Done. So what is the meaning of A? People who read only newspaper H. What is B? People who read newspaper H and I. What is C? People who read the newspaper H, T and I. Done. So this is the Venn diagram. Now we'll put this all the values in our Venn diagram. So again I have to redraw this Venn diagram. इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं. So this is again this is our H, T and this one is I. Now देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. N intersection, sorry, H intersection T intersection I. That means people who read all three newspaper. So this is 3. That means this area lies in all three sets. Now this one H intersection I. H intersection I. Total 9 are there. 3 already there. So it's a 6. Next one is H intersection T, 11. H and T total 11. So 3 already there. 8. देखो 8 plus 3 total 11 people are there who read H and T. 6 plus 3, 9 people are there who read H and I. Now next one is I intersection T, which is 8. 5 already there, so you have to write 5. Clear? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, now ये हो गया. Now H, number of people in H are 25. तो इसके अंदर टोटल 25 होने चाहिए. तो 8 plus 3 11 plus 6 17 हो गए. कितने बाकी रहे? 8. Now number of people in T 26. 5 plus 3 8, 8 plus 8 16. तो बाकी कितने रहे? 10. So total 26. Here 9 14. So total 6 plus 3 9 plus 4 14. और I के अंदर टोटल कितने हैं? 25. So this will be 12. 18 plus 3 11 plus 5 26. I में 26 हो गया. So now question is number of people who read exactly one newspaper. So number of people who read exactly one newspaper. So for exactly one newspaper you have to add these numbers. Done. 8 plus 12 plus 10. 8 plus 12 plus 10, which is equal to 30. So number of people who read exactly one newspaper are. Okay students, now question number 16. Before starting question number 16, make correction in the question number 15. So number of students in I, there are 26. Done. So answer of question number 2 will be 30. Now question number 16. In question number 16 we are given that in a survey it was found that 21 people like product A, 26 people like product B and 29 like product C. So number of people who like product A, equal to 21. Number of people who like product B is 26.
people who like product C are 29. Number of people who like product A and product B are 14. Number of people who like product B and C are 14. Number of people who like product A and product C are 12. And number of people who like all three products are 8. Done? So find how many people like product C only. You have to find the people who like product C only. Question is number of people who like product C only. यहाँ पर number of C, that means number of people who like product C. It might be that people like product B and product A also. Then ये आपका आंसर नहीं, आपको फाइंड करना है only C. So for that we have to consider one Venn diagram. So let us now consider one Venn diagram. आपको सब डिफाइन करना है. Set A is a set of people who like product A. Set B is a set of people who like product B. And set C is a set of people who like product C. Done? ऐसे आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिखना है. So this is set A, B and C. Now number of people who like all these products, so which is 8. Number of people who likes product A and C, पहले लेते A and B, so it is 14, so this will be 6. Number of people who like product B and C, 14, so for B and C it is again 6. Number of people who like A and C both, 12, so this can be 4. ये भी आ गया. Now number of people who like product A, total 21, so it's a 4 plus 6, 10 plus 8, 18 plus 3, 21. Number of people who like product B, 26, it's a 6 plus 6, 12 plus 8, 20, so this will be 6. And for C, 18 are there, so it's a 11. Clear? Now what you have to find? The people who like only product C. So these are the people who like only product C. So number of people who like product C only C, that is 11 answer. Clear? What is this 29? So people who like A and B or ABC, so total number of people are 29, but the people who like only product C is 11 is your answer. Clear?